मई जून 2019, पेपर 3-1। केस स्टडी का नाम है ब्राइट स्टोन ज्वेलरी। केस स्टडी का नाम क्या है? ब्राइट स्टोन ज्वेलरी। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है? डिस्कस वेदर इंप्रूविंग इंटरनल कम्युनिकेशन, वेदर इंप्रूविंग व्हाट? इंटरनल कम्युनिकेशन विल बी इनफ टू इंश्योर BSJ ओवरकम्स इट्स क्वालिटी प्रॉब्लम्स। यानी क्वालिटी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है और कम्युनिकेशन भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। इंटरनल का मतलब क्या है? फ्रॉम विद इन द बिजनेस, यानी आपस में वर्कर्स में, डिपार्टमेंट्स में, टीम्स में, यहाँ पर जो बातचीत हो रही है उसकी सारी बात हम कर रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्टेक होल्डर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और क्वालिटी की बात हो रही है। अगर मैं आपसे 2 मार्क के सवाल पूछता हूँ एएस के हिसाब से, अभी तो A2 के हिसाब से नहीं है, डिफाइन द टर्म क्वालिटी। डिफाइन द टर्म व्हाट? क्वालिटी। तो आप लोगों के हिसाब से क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बाय द कस्टमर। अगर तुम ऐसा कस्टमर हो, तुम्हारे लिए वो चीज एक्सेप्टेबल है, तो वो क्या है? क्वालिटी है। जाहिर सी बात है ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का बन कबाब खा रहा हूँ तो मेरे लिए क्वालिटी का पर्सपेक्ट डिफरेंट है, और अगर मैं 2000 रुपए का स्टेक खा रहा हूँ तो मेरे लिए एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। सही में कोलाची बैठा हूँ ना और टेबल क्लॉथ पर हल्का सा निशान भी होगा तो मैं वेटर बोलूंगा भाई अभी के अभी चेंज करो, क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ उसके लिए, मेरे लिए वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन हम जब ठेले में बैठ के खा रहे हैं तो गेम ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बात ये हो रही कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं। क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं। तो हम किसकी बात करेंगे कि हम उसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो क्वालिटी का मसला कैसे रिजॉल्व हो सकता है। तो बातचीत करते हैं, केस स्टडी स्कैन करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। ब्राइट स्टोन ज्वेलरी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये टूरिज्म से रिलेटेड कोई पेपर है, फिर भी हम केस स्टडी स्कैन करते हैं, देखते हैं इसको। When her father retired, Janice became the main shareholder of BSJ and promoted herself from marketing director to managing director. अगर ये पहली लाइन पढ़ के मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मोस्टली ये बिजनेस क्या होगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, क्योंकि क्या बोल रही है ये कि जैसे ही जनीस का जो फादर रिटायर हुआ, शी बिकेम द मेजर शेयर होल्डर। तो मुझे एलिमेंट नजर आ रहा है कि कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 4 ऑफ द 5 से बात ही कंफर्म हो जाती है कि कौन सी कंपनी है? प्राइवेट है। और ऑफ द सेम फैमिली। और दूसरी बात ये भी समझ में आ जाती है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दूसरा फैमिली ओन बिजनेस है। अच्छा, ये जो थोड़े बहुत बुलेट पॉइंट्स हम बनाना चाहो तो बनाते हुए जाओ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पहला बुलेट पॉइंट, दूसरा बुलेट पॉइंट क्या आ गया? फैमिली ओन बिजनेस है। पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दूसरा क्या है? फैमिली ओन बिजनेस है। और फैमिली ओन बिजनेस में एक बात याद रखना, दैट देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मसला आता है? कम्युनिकेशन का मसला आता है, क्योंकि इनफॉर्मेलिटी आ जाती है। सही, इनफॉर्मेलिटी आ जाती है कि भाई आप कर लेना, भाई आप कर लेना, और एंड में काम नहीं होता। BSJ produces luxury, expensive jewelry, including rings, bracelets, necklaces and pendants. इनका प्रोडक्ट लाइन क्या है? एक्सपेंसिव, लग्जरी, प्रीमियम। परफेक्ट। यानी इनकी प्रोडक्ट लाइन क्या है? ये बात नोट करो अपने पास, एक्सपेंसिव, लग्जरी और प्रीमियम। सम ऑफ द डिजाइन्स हैव बीन यूज्ड फॉर सेवरल ईयर। जमाने से डिजाइन्स चल रहे हैं, बट 40 डिजाइनर्स आर एम्प्लॉयड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। बिजनेस के पास 40 डिजाइनर्स हैं जिनकी ड्यूटी क्या है? दैट दे नीड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। BSJ एम्प्लॉइज 250 वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं उनके पास? 250 वर्कर्स, यानी एक सब्सटेंशियल बड़े अमाउंट, बड़े साइज का बिजनेस है। इन इट्स फैक्ट्री इन द कैपिटल सिटी, their method of payment has recently been changed from a time based to a piece rate system. तो आपको AS की बात याद आ रही होगी। टाइम बेस्ड क्या होता है? पर आवर रेट है, जैसे मैं भी पर आवर पे काम कर रहा हूँ। और पीस रेट सिस्टम क्या होता है? क्वांटिटी वाइज होता है, जितना आउटपुट होगा उतना पैसा होगा। BSJ supplies well known international brands and specialist jewelry stores. डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं बेच रहे, B2B बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? B2B बिजनेस है। इन मेजर वर्ल्ड सिटीज, मतलब मल्टीनेशनल। क्या बिजनेस है? मल्टीनेशनल। यानी मल्टीनेशनल ऐसा प्रोडक्शन फैसिलिटी तो नहीं कहेंगे, मल्टीनेशनल ये कह लेंगे कि इनके पास इंटरनेशनल क्लाइंटेल है। क्या है इनके पास? इंटरनेशनल क्लाइंटेल है। आगे देखते हैं। BSJ सब अच्छे तो हो गया। It also has its own stores near the factory aimed at the tourist market, which means ये B2B मार्केट के अंदर भी है और ये B2C मार्केट के अंदर भी है।
एथिक्स की बात करते हैं। देखो एथिक्स आर द मॉरल गाइडलाइंस अ बिजनेस फॉलोज विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। अपनी मर्जी से करता है, कोई जबरदस्ती नहीं करवाता। तो बायर्स एम्प्लॉयड बाय बीएसजे, यानी बायर्स और द इंडिविजुअल्स जो बीएसजे ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड्स, रूबीज वगैरह परचेज करेंगे। सही है। तो दे आर एक्सपेक्टेड टू कीप कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल। उनकी ड्यूटी क्या है कि वो क्या करें, कॉस्ट कम से कम रखें while meeting quality requirements. The buyers chose which supplier they use, यानी बायर्स की मर्जी होती है कि सप्लायर से मटेरियल लेना है किससे नहीं लेना। पेड्रो, बीएसजे सीनियर बायर सस्पेक्ट्स, वो सस्पेक्ट कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, that some of the revenue raised from the sale of raw material is used to finance criminal activities। अब सीन ये हो रहा है कि जो उनको मिनरल्स आ रहे हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स आ रहे हैं ना, उनको ये सस्पेक्ट कर रहे हैं दैट जो उनसे ये जिनको ये पे करते हैं जो सप्लायर्स हैं, उनके पास जो ये पैसा आ रहा है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों से प्रेशियस स्टोन्स खरीद रहे हैं ना, वो जो ये पैसा अर्न कर रहे हैं वो ये पैसा इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक एथिकल कंसर्न है यहाँ पर। He also knows that some gold and silver is produced by exploited workers and children। आपको पता है जैसे ब्लड डायमंड मूवी देखी है? ब्लड डायमंड एक मूवी जो पूरी इस तरह के केस के ऊपर ही है, दैट वो जो वहां पर माइंस में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ही बुरे तरीके से एक्सप्लॉइटेड होते हैं। बेसिक राइट्स वगैरह, हाँ कह सकते, हाँ देसी वर्जन केजीएफ है, बिल्कुल कह सकते हो। He also knows that some gold and silver is produced by exploited workers and children, often using methods that damage the environment। एक तो environmental issue भी आ रहा है, सही है, environment भी इफेक्ट हो रहा है, workers भी exploit हो रहे हैं। Pedro has also become aware that BSJ's retail customers overseas increasingly want to check that their suppliers or that their supplies are sourced ethically। यानी अब ethical concern आ गया सोसाइटी के अंदर, और जो कस्टमर है वो देख रहा है कि जो मिनरल आया है वो कहाँ से आया है, अगर एथिकल है तो ही वो परचेज करेगा वरना नहीं करेगा। तो इसका एथिक्स के ऊपर पूरा सवाल है। एथिक्स है तो ऐसे एएस का पार्ट आपके पुराने सिलेबस के हिसाब से अभी भी उधर ही है। हाँ हाँ, ये एथिक्स एएस का, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो एएस के जो A2 में आ जाते हैं। अभी तो हम ये नहीं कर रहे हैं, बाद में अभी करेंगे। अभी हम करते हैं कम्युनिकेशन का सवाल, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनीस looked at some key indicators for the last 2 years and was worried that productivity was falling। उसको ये बात समझ में आ गई कि हालात अच्छे नहीं, productivity is falling which means there is lesser output and there is more wastage। input नहीं, wastage ज्यादा है, लेकिन कह भी सकते हो कि input ज्यादा है और output कम। and the percentage of rejects from the factory was increasing, यानी defected products क्या बन रहे हैं, which means the end product जो बन रहा है वो अच्छा नहीं है। Some retail customers stated that they would buy elsewhere unless quality improves। रिटेल कस्टमर ने क्या बोल दिया, भाई क्वालिटी इंप्रूव करो वरना हम आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। She investigated what was happening at the factory। वही कम्युनिकेशन के मसले यहाँ पर नजर आए। Production employees are given little training, ट्रेनिंग नहीं देते, and are expected to use drawings and material specifications produced to produce the items of jewelry। अब देखो, and they are expected to use what? To use drawings and material specifications to produce the items of jewelry। यानी एक ड्राइंग आती है, बोलते इसको देख के बना दो। अब देखो ड्राइंग क्या 2D है, क्या है 2 डायमेंशनल है, एक पेज पे नजर आ रही है ना, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई 3D इमेजिंग नहीं है ताकि हम उसको डिफरेंट एंगल से देख सकें। जब सिर्फ 2D है तो आपको एक तरफ से नजर आ रहा है, तो उस तरीके से शायद मसला आ रहा होगा, एंड रिजल्ट वैसा नहीं बन रहा। तो दूसरी बात, सुपरवाइजर्स यूज नोटिस बोर्ड। कोई बात करनी है सिर्फ नोटिस लगा दिया, अगर एम्प्लॉय ने जाके पढ़ा तो ठीक है, वरना इंफॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंच रही। ठीक है। दूसरी बात, यूज नोटिस बोर्ड्स टू इन्फॉर्म प्रोडक्शन एम्प्लॉइज ऑफ एनी चेंजेस टू डिजाइन और वर्किंग प्रैक्टिसेस। हाँ, वन वे हो रही है, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है और कोई इनपुट नहीं है। दूसरी बात करते हैं, ईच एम्प्लॉय वर्क्स एट एन इंडिविजुअल वर्क स्टेशन यूजिंग वेरी ओल्ड इक्विपमेंट। एक तो इक्विपमेंट भी पुराना है, इसकी वजह से भी क्वालिटी का मसला है, और अपने इंडिविजुअल स्टेशन से बैठे हुए, यानी वापस इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर वर्कर कम्युनिकेशन का मसला आ रहा है, लाइजॉन का मसला आ रहा है। हाँ, यानी वर्किंग स्टेशन मतलब देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी टेबल से बैठे हैं ना, ये तुम्हारा इंडिविजुअल टेबल है, यहाँ पर इसका क्यूबिकल बना दो,
एक शीट यहाँ पर लगी हुई, एक शीट वहां पर लगी हुई, अब बस तुम इसके अंदर ही बैठ के काम कर रहे हो, ये तुम्हारा वर्किंग स्टेशन है। इस तरह अलग अलग वर्किंग स्टेशन बने हुए, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। वो होता है ना स्टेप वाइज या प्रोडक्शन प्रोसेस डिवाइडेड नहीं, मिलके काम नहीं हो रहा, टीम वर्किंग नहीं है। दूसरी बात, देयर इज लिटिल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोडक्शन एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स, यानी हर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन। अब भाई आपको जब क्लियरली सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो वर्कर काम कैसे करेगा? जब वर्कर जब को सब सही तरीके से पता नहीं होगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा, तो जाहिर सी बात है एंड रिजल्ट क्वालिटी का वैसा नहीं आएगा। दूसरी बात, स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड याद आ रही है? उसके अंदर जो सेकंड लेवल होता है ऊपर से, सेल्फ स्टीम, इज्जत, रिस्पेक्ट, वो वाली बात आ रही है। स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर्स गिव रिटन इंस्ट्रक्शंस टू सुपरवाइजर्स एंड एक्सपेक्ट देम टू कैरी आउट। मैनेजर्स क्या करते हैं, सुपरवाइजर्स को रिटन इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई ये काम करना है, कम से कम वहां पर रिटन है। लेकिन यहाँ पर कहीं बात समझ में नहीं आ रही कि सुपरवाइजर से इनपुट लिया जाता है, या यानी पूरे केस में अब तक मुझे ये नजर आ रहा है वन वे कम्युनिकेशन, टॉप डाउन कम्युनिकेशन, ऑटोक्रेटिक अप्रोच है, सेंट्रलाइजेशन है, हायरार्की है। The production workers gather in small groups outside the factory when work has finished. यानी outside the factory वो गैदर होते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वो क्यों गैदर होते हैं? अगर ये आउटसाइड ट्रेड यूनियन भी हो सकती है या क्वालिटी सर्कल्स की बात भी आ सकती है, लेकिन गैदर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं हमें पता। अगर वो इनसाइड द फैक्ट्री गैदर होना स्टार्ट हो जाए, इनपुट देना स्टार्ट हो जाए, तो मामला बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो सकता है। तो अब हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं देखूं सर इसको समझ में ले सकते हैं कि वो ट्रेड यूनियन वो भी हो सकता है, बिल्कुल उसे assumptions ले सकते हैं। Discuss whether improving internal communication will be enough to ensure BSJ overcomes quality problem. अगर मैंने देखा तो भाई कम्युनिकेशन का मसला तो है साथ साथ, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन का मसला नहीं है, साथ साथ मशीनरी का मसला भी है, साथ साथ लेआउट का मसला भी है, साथ साथ डिजाइनिंग प्रोसेस का मसला भी है। तो सिर्फ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके ये मामला रिजॉल्व, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे तो कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी, बट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए हमें बाकी इश्यूज जैसे टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, ये सब चीजों को भी काम करना पड़ेगा। पहले तो बिस्मिल्लाह करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। अपने रजिस्टर्स ओपन कर लो, हाथ में पेंसिल्स ले लो, प्रॉपर जगहें देख लो ताकि आराम से तुम लिख सको सब। हाँ, क्वेश्चन आप लोग लिख लो, क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख लेना। ईयर लिख लो अपने पास, मेजून 1931। क्वेश्चन नंबर 3, मेजून 1931, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस सवाल के अंदर जो डिफाइनिंग टर्म मुझे नजर आ रहा है ना, वो नजर क्या आ रहा है, इंटरनल कम्युनिकेशन और क्वालिटी। सही है, तो उसी से हम डिफाइन करेंगे और बात स्टार्ट करेंगे। सही है, जो नॉलेज का मार्क्स हमें यहाँ से इनिशियली मिल जाएगा। इंटरनल कम्युनिकेशन इज, इंटरनल communication is when the workers, when the workers and the management and the management and the management is communicating, is communicating and coordinating and coordinating with 16 marks का, communicating 16 marks, communicating and coordinating with each other, with each other in the business, in the business, full stop, while quality is anything which is acceptable or desirable by the customers, or desirable by the customers,
फुल स्टॉप. अगला पैराग्राफ. अगला पैराग्राफ. The case identifies that DSJ uses a top-down approach in which the orders are provided by the senior management while the workers have to follow them full stop. There is no opportunity for feedback. Therefore, the communication is not effective. The communication is not effective. Effective. Full stop. The case identifies. The case identifies that the workers are provided drawings. Simple drawings, paper drawings. That the workers are provided drawings and are expected to use them to make jewelry while the supervisors only use notice boards to inform the employees about changes in designs and working practices. Therefore, if electronic forms of communication such as emails or written documents with a feedback are used the workers may get
the workers may get more accurate and immediate information which may and immediate information which may reduce the chances of errors solving the quality problems the chances of errors solving the quality problems to an extent however as the technology is old so improving communication may not be the only solution. ठीक है, अभी एक पैराग्राफ आया, अगले पे आते हैं, बात करते हैं. The case identifies, अगला पैराग्राफ लिख लो. The case identifies that status is very important. In the organization as managers gives instructions and expect the supervisor to follow it without any discussion full stop. As without any discussion, as supervisors are the one as supervisors are the one dealing with the workers, as supervisors are the one dealing with the workers, their input is really important for effective results also when supervisors may not be involved they may feel demotivated and not valued
They may feel demotivated and not valued. So a two-way communication process. So a two-way communication process may help the business, overcome barriers, may help the business overcome barriers, overcome barriers. However, the workers and management will require training, which may be an additional financial burden, an additional financial burden. अभी एक और पैराग्राफ, which may be an additional financial burden. अगला पैराग्राफ, the case identifies that the workers are meeting outside the organization informally, which may be an indication, which are meeting outside the organization informally, which may be an indication that they may want to contribute and be involved in the business processes, as they may want to contribute and be involved in the business processes. So if BSJ changes the approach, from one way, if BSJ changes the approach from one way communication to two-way communication, the results of the output and the quality issues may change. However, without upgradation of the machinery and changes in the production process,
the quality problems cannot be, in the production process. and the quality problems cannot be totally overcome full stop. तो यहाँ तक आपका एक आंसर था इसके अंदर कम्युनिकेशन और क्वालिटी को साथ साथ यूज किया।